हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। व्हाट अ प्लेजर इट इज़ टू बी बैक विद यू। ब्रेक एक ही दिन की थी, बट ऐसे लग रहा है कि आई वॉज अवे फॉर मेनी मेनी डेज। तो हम आ गए हैं वापस दोबारा से डीएनए। आज है 23 जनवरी, 23 जनवरी 2024, ठीक है। एंड इट इज़ अ ट्यूसडे, इट्स अ ट्यूसडे। तो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर वंडरफुल विशेस. आई वॉज आउट फॉर 2 days to Sultanpur Bird Sanctuary, now the National Park. It's one of the Ramsar sites, and what a sight it was to see birds in their natural habitat, to meet birds who come all the way from China, from Mongolia, from Russia, our own internal migration, birds from the Himalayas, from South India, from all over the country. The birds come there. So it was wonderful. Let me now read your messages. Saket Prasad, Billy Fang, Manju Sharma. Manju, yes, our major sir, DNA is daily new attempt. नया नाम है DNA का, daily new attempt. That's very nice. Very good, Manju. Uh, More proactive, secular, proactive, enthusiastic mentor. ये बड़ी चीज़ है. Secular, absolutely. Proactive and enthusiastic. I've sat on my chair and put my luggage here, pen and paper. That's very nice. Manju Sharma, the DNA is an informational YouTube show, but the writer, director, and producer are none other than our dear General Saab. Thank you very much. Ikra, hey sir, you are awarded the Michelin star. Michelin is the correct pronunciation. Michelin star, as you are one of the exemplary chefs whose aroma of native ingredients, erudite plus experience brings us to the brunch at 10 o'clock sharp. Bhai, this is too much. Ikra, wonderful. Ashish, Gaurav, Yuvraj sir came back for rehabilitation after hectic and energy rushed week. My speech in front of the chief guest was smooth. Excellent, Yuvraj. Yuvraj is one of our mentees. He's in Army Public School. He's the school captain and does a lot of work. Garishma Reddy. Garishma is the one who's recommended recently from AFSB Guwahati for Air Force, and she'll be coming to Delhi for her medical. मैं सोचता रहा गरिश्मा है, गरिमा से इसका नाम बना है. गरिमा मीन्स being proud, being heritage, that is Garima. But actually is Grishma is जो गर्मी को हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं ना, तो इसलिए वो ग्रीष्मा रेड्डी है. वेरी नाइस. Gaurav, today's line, life and time are the world's best teachers. Life teaches us to make good use of time, and time teaches us the value of life. Very nice. Kahna, Shivaji, Sadhana, Gaurav, Yodha, Kuldeep, Kajal, Ketan, Anjali, Sarika. Sir, welcome back. We are thrilled to have you here again. Your return brings a wave of inspiration and motivation. Your daily newspaper analysis is truly exceptional with its insightful analysis. Saket Prasad, freedom is not given, freedom is taken. Freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes. Subhash Chandra Bose, aim to be like a rhino, to have a single purpose, to charge at obstacles, goals with total commitment. Thank you, Rhino, then Sarika, Ajay, Virendra, Vaishali, Koshish. Sir, you have quality time with your family and Mother Nature. Do let us know whenever you've been to Pataudi as well. Oh, Pataudi, I wanted to, but that palace is closed for public now. I was thinking we'll go to Pataudi, but वो palace अभी closed है. You can't go and see that palace. Ravindra, वन नेशन वन इलेक्शन मेरी क्लास है उसके ऊपर. वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर आप देख लेना. आर्यन, मुकेश चंद, जय बद्री विशाल साहब, एस यू नो देर इज बिजी शेड्यूल इन इन्फेंट्री, सो आई कांट अटेंड डीएनए लाइव. ये है एससीओ के लिए तैयार कर रहा है, और हमने एससीओ कईयों को बना भी दिया ऑलरेडी. वो आर इन आईएमए और हैव ऑलरेडी बीन कमीशन. शशांक, मोहन यादव, प्रशांत, अभय प्रताप, जका, शिवाजी, वर्षा, हर्षित, आदर्श, कुणाल, सैनाथ, Ayush, Nishtha, Zaka, how the trip? Oh, the trip was very good and the birds were very nice. Gajanand, Sahu, Varsha, Satakshi, Ayush, Ashik, Hussain, Navneet, Tushal, Usha, Shiva Tripathi, Sumedh, Longe Wangsa, अरुणाचल से. लॉन्गे वांगसा इज इन असम राइफल्स. इसने पिछले एएमए में था, ये एएमए में था हमारे साथ. हर्ष शर्मा, चंद्रकांत, अतुल, दीपायन. So, do you believe it's right time to involve Air Force in Ram Temple ceremony? We will discuss this थोड़ी देर में.
Just one small positive thought in the morning can change the whole day, and the positive thought is DNA. ये है बड़ा राजू टुडू, बड़ा राजू टुडू. He is a Santhal, very proud Santhal, and preparing for NDA. Sayan Chakraborty, Mohit, Sujal. Thought of the day: we don't just sit around and wait for the people, we just make and we do. Adrian Hamilton. Okay. Pratik. Yesterday you felt lost without the DNA, that is Longe Wangsa. चलो स्टार्ट करते हैं. अब मेरे पास टाइम नहीं है बाकी पढ़ने के लिए. चलो ओके, let's start with the Hindu today. And they start with this: rituals done, Prime Minister calls it a historic day. There is no doubt it's a very, very historical day. 22nd January 2024 is you all are seeing history in the making. ठीक है, like I remember many old dates and will remember this also, but for your generation this is a defining moment for India. On the other side, we will cover this: Supreme Court to decide if centre entered Punjab domain. This is a case where the Punjab government has gone to the Supreme Court whether the centre can, for law and order, they have said 50 kilometers inside on the IB, the BSF and the IB can act. So on that, इस पे आगे भी बात करेंगे. Chinese vessel in Indian Ocean now heading to Maldives. Maldives में now the date they have given for India to withdraw is coming nearer and nearer, and let us see, will we withdraw or we will stay there, and क्या होता है, let us see. This is the issue, center state issue. Apex Court to decide if centre encroached on Punjab's domain. So this, again, the case has gone to Supreme Court. Punjab has challenged constitutional validity of a notification issued by the centre extending the reach of BSF to 50 kilometers. कि BSF का reach is on the border. They are manning the border BOPs, border outposts. तो उस पे anti-smuggling, anti-infiltration, securing our frontiers, this all task of BSF. But they say 50 kilometers. 50 kilometers, तो entire Amritsar, Ajnala, Batala, Gurdaspur, all the cities will come under the BSF, under their jurisdiction. Which has applied to Bengal, was opposed by both states. So Bengal and Punjab, both states have applied, and Chief Justice led bench fixed 3rd week of April for hearing. तो ये 3rd week April में इसका hearing होगा. जब होगा हम बात करेंगे. While the nation was celebrating, different people, opposition has its view, different people were celebrating in different way. In Bengal, it was a Sarv Dharam kind of a march promoting unity among people. So you can see Sanhati rally in Kolkata, where people from all faiths walked in unison and towards building a better India for all of us. So then you have a lot of pictures of Republic Day parade and celebrations of the temple opening, but we will go here now. Tax contribution by states need to be revisited. This is a very nice article written by Mr. Srinivasan and Raja Sethu Dural. So they say that tax contribution of each state is a good measure of efficiency, and the GST regime creates an opportunity for its inclusion in the distribution formula. So this is coming, ये बार बार डिबेट अब हो रही है कि किस स्टेट को कितना GST स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है, उसमें से how much should come back, GST, income tax, various other taxes which are collected by the states and given to the government. So उसके ऊपर how much should be the formula, what should be the formula, what should they get, because see, in a country like India or anywhere, there's always resource crunch. Everyone wants more of the pie so that you can do more. Finally, leaders need money in hand to do big projects. ये आइडिया ऑफ वन इंडिया वन इलेक्शन, अभी कोई पूछ रहा था चैट के अंदर, इज अगेंस्ट फेडरलिज्म. दिस इज बाय मनुराज Shamuga Sundaram. Is an advocate in Madras High Court and is a spokesperson for DFK. He says any action that impinges upon the independent constitutional existence of a state by altering the duration of the legislative assembly would naturally be anti-federal and anti-constitutional. The issue is, it's good when you just look at one India, one election, one India, one plan. Everything, it looks very nice, very patriotic. It will save money, it will save so many things, there's no doubt. However, is it practical or not? In a diverse country like ours, if an assembly
collapses, or there is Ayaram Gayaram, or there is an operation to buy MLAs, which happens very frequently. Recently, we have seen in last 4 or 5 years, so many governments have collapsed, and people have en masse gone to another party and then come back in another route or this. So what do you do then? What do you do then? So this is the big issue. This committee under the former president is sitting. While I gave you what is the opinion of the opposition, almost everyone has said no. They said wind up this committee, don't waste time and money, and let it go as it is going. So, and they have opened it for public also to write to them. So this is one article which says it is not prudent to go now. From fear to hope. Now, I have seen, right, at least last 30-40 years, the situation in Ayodhya, in Uttar Pradesh, and how the politics around building a Ram temple have actually changed the mindset of this country. The politics around this, the yatras, the vicious campaign that I have seen, and some of the names are not there. People who are so much in the front of all this. And then finally, it required judiciary to clear the way for building a temple, which happened, and very quickly the temple has come up. So the editorial says from fear to hope. So the opening of Ram temple in Ayodhya is a sharp turn in the course of nation. It's a sharp turn. The central role of the state in the rituals associated with the inauguration of temple is being celebrated by the proponents of the temple, while its opponents fear it is the beginning of a dangerous slide. ये है, whenever you discuss this at home, in school, in college, among friends, this topic must be discussed. Whether it is right, should the state be involved in religion, or religion should be led to religious people and the people in their own faith, because faith is something which is personal. State is not personal. State का काम है law and order, taxes, policies, rule of law, and looking at everyone with the same kind of glasses. So two divergent visions of Indian nationhood inspire the two sides. The inauguration of temple marks a definitive milestone, if not a comprehensive victory for the visions of BJP and Prime Minister Narendra Modi. But it is also beginning of a new era in the history of the country, an era that will last for centuries. He called for humility along with celebration of victory. So is it triumphalism? Is it victory which we got? Or is it now what the Prime Minister said, humility, Vinay? He's used the word Vinay. Vinay is humility, invoked in the universality of spirit of Ram that encompasses all humanity, portraying the temple as a link between India's rich cultural inheritance and ambitions for the future across the various regions and communities of India. The Prime Minister exhorted fellow citizens to think big and work purposely for progress. Ram Rajya has multiple imaginings. The temple in Ayodhya must inspire and promote the conception of a polity determined not by obsession with the past, but by the appreciation of the difficulties of the present and the challenges and opportunities of the future. ये I think ये crunch lines है कि अब पीछे ठीक है, you can get inspired from the past, but please appreciate the difficulties of present. अब जो difficulties of present, इसको हम नारेबाजी में भाग नहीं सकते इस चीज़ से. क्या है आज की डिफिकल्टी एंड व्हाट इज द विजन फॉर अस इन द फ्यूचर एंड व्हाट इज द अपॉर्चुनिटीज. हमेशा हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस. पर्सनल लाइफ में मैं कहता हूँ स्वॉट एनालिसिस करो, है ना, कि अपनी डायरी में लिखो, देखो आपके पास कब अपॉर्चुनिटी है, क्या चैलेंजेस है, एंड दिस सेम इज होल्ड फॉर द ट्रू. सो दिस इज अ नाइस एडिटोरियल फ्रॉम फियर टू होप. आई विल सेंड इट टू यू. तो ये हो गया. दिस इज ऑफकोर्स spiking tensions. Dialing down aggressive rhetoric is crucial for peace in Korean Peninsula. This is between North and South Korea. Now we have fired up and plugged in. Fired up, आग लगी हुई. ठीक है. This is related to coal. This is written by Karthik Ganeshan and Tarun Mehta. They say focus on energy security will likely drive India's decade of decarbonization and renewable energy. हमने अपने आप को decarbonize करना है. And we have to move towards renewable energy. Fossil fuels are they will be over someday. Oil will be over someday. And the kind of impact burning of coal has is we have been discussing environmentally. So he says, the writers say, as India throttles to become the fastest growing economy in the coming years, it will have to grow in the wake of global agreement at COP28 जो अभी दुबई में हुआ था.
to phase down unabated coal. In this critical decade, the spotlight will be on how India decarbonizes its power sector while ensuring economic development and energy security. ये मैंने आपको बहुत बार समझाया, ये मैंने इतने अच्छे समझाया कि आप किसी के साथ भी इस पर बात कर सकते हो. As we grow, as the nation grows and our economy moves up, as millions of people move from poverty to lower middle class to upper middle class to higher class, हैं, लखपति करोड़पति बनेंगे, करोड़पति अरबपति बनेंगे, जिसका लाख नहीं है वो हजारपति से ऊपर आएंगे, तो वी विल रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी. कारें आएंगी रोडों पे, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ये तो एक तरीका जो ऑयल यूज करते हैं. द अदर थिंग इज इलेक्ट्रिसिटी. Everybody will need a light. Everybody will have one fridge, two fridge, one AC, 5 AC, 10 AC, 30 ACs, full house air condition, offices air condition, trains air condition. So airports, seaports, everywhere you'll need energy, electricity. Electricity कहाँ produce हो रही है? Thermal plants में. Thermal plant में क्या जलता है? कोयला जलता है. तो जितनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उतना कोयला हमें जलाना पड़ेगा. जो ये स्कूटर आ गए हैं, इलेक्ट्रिक कार आ गई हैं, जब तक वो सोलर से पावर नहीं है या विंड से पावर नहीं है, वो कोई खास एनर्जी सेव नहीं हो रही है. बिकॉज जो बिजली को आपने प्लग करना है, उसको चार्ज करने के लिए स्कूटर को, कार को, इसको ये सारी की सारी थर्मल प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है. सो फ्रॉम देयर द कोल इज बर्निंग एंड ग्रीन हाउस गैसेज आर बीइंग एमिटेड एंड द टेम्परेचर्स आर राइजिंग. तो ये बहुत विशियस सर्कल है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट. ये मैं कई बार ये बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ. जो इस चीज़ को समझ जाएगा वो जिंदगी भर किसी भी डिस्कशन में एनर्जी से लेके, एनवायरनमेंट से लेके, पॉवर्टी से लेके, डेवलपमेंट से लेके मार नहीं खाएगा. तो ये बहुत अच्छा है कि सो हाउ डू वी फोकस? इज सोलर सफिशिएंट? कैन वी डिपेंड ऑन सोलर? कैन वी डिपेंड ऑन हाइडल? आपको पता ही है, हैज़ इट्स ओन इशूज, क्रिएशन ऑफ डैम्स and submersion of areas and the many things associated. Same is with wind power. Wind power है, we have windmills in Rajasthan, Gujarat, but can they produce that much of electricity कि हमारे देश लाइट अप हो जाएगा? नहीं. तो ये है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है. कोल को हम फेज आउट करेंगे या ड्राउन आउट करेंगे. Then we have on equal access to benefits for all SCs. This is related to why has high level committee been formed post Prime Minister's promise to Madiga community in Telangana. What has the community been demanding since 1994? Can Parliament sub-categorize castes within scheduled caste? तो प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ जाके मडिगा कम्युनिटी के लिए बोल दिया हम आपको करेंगे, आपको रिजर्वेशन देंगे. अब बहुत पेचीदा सवाल है, इसीलिए कई बार ये लगता है कास्ट सेंसस एक बार हो ही जाए कि पता तो लगे किस कम्युनिटी के कितने लोग हैं, किस जाति के कितने लोग हैं, कि शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर भी इतनी कास्ट्स हैं. वो भी एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, वो भी एक दूसरे को अनटचेबल समझते हैं, या उसमें भी लोअर एंड अपर स्टेटा है. हर जगह स्टेटस है. वी आर वेरी स्टेटस कॉन्शियस. हम बहुत ज़्यादा स्टेटस कॉन्शियस, जात के बेस पे, रंग के बेस पे, एरिया के बेस पे. तो ये जो है इसका क्या होगा बाद में देखेंगे. नाउ दिस इज दो नॉट कवर्ड विद माय मेनी न्यूज़पेपर्स. दिस FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ सेवरल NGOs हैज बीन कैंसिल्ड. सेवरल इंटरनेशनल जो 50-50 साल से भारत में काम कर रहे NGOs, कोई बच्चों के लिए काम कर रहा है, कोई पॉवर्टी एलिवेशन के लिए काम कर रहा है, कोई थिंक टैंक्स हैं, उन सबके FCRA, दैट इज FCRA इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इन विच यू कैन रिसीव मनी फ्रॉम अब्रॉड. यू कैन रिसीव मनी बाय डोनर्स फ्रॉम यूरोप, अमेरिका, कहीं से भी, कि आप भारत में अच्छा काम कर रहे हो, $10 ले लो, 100 लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, तो मिलियंस भी कंट्रीब्यूट. सो लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देयर FCRA हैज बीन कैंसल्ड because the government feels these are routes for conversion, कि इसके थ्रू कन्वर्जन हो रहा है या इसके थ्रू एंटी इंडिया एक्टिविटीज हो रही है. दैट इज द पिक्चर दैट इज पेंटेड. सो इसके ऊपर विच आर द वाई सेवरल NGOs हैव बीन अफेक्टेड, हाउ मेनी हैव बीन अफेक्टेड, एंड इससे व्हाट इज द इमेज वी क्रिएट outside. So some of the NGOs are very, very old, but their license have been cancelled, so they are almost at the verge of, many will close shop very soon. This is basically based on the Center for Policy Research and World Vision India have been cancelled recently. Intersectionality of gender and caste in women's participation in the labor force. तो ये भी मुद्दा मैंने बहुत बार डिस्कस किया कि the nation will become
progressive. Our GDP will increase, per capita income will increase, the fertility rates will come down further in areas wherever women are out for work. It's so important for Adi Abadi also to contribute, not just at home, just caring for the children and the being a homemaker. More and more women should be out working. But हमने कई बार statistics cover किए इस चीज़ में. Most of our women are in informal sector, or in agriculture sector where the wages are very very low or not even counted. So this paper is a comprehensive exploration of gender and caste dynamics in India's labor market. Gender and caste, दोनों का dynamics. Know your English, word of the day, and of course there's a quiz on Salvador Dali, one of the most acclaimed 20th century artists, on his 35th death anniversary. शुरू में बताना भूल गया मैं, I sent you a picture in the morning. Today is the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. Today is the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose, a great son of Mother India. Great son of Mother India who formed the INA, and he joined hands went across to Germany, went to Japan, joined hands with those forces to fight the British. And many of he's an iconic figure. He's an iconic figure in India's freedom struggle. And growing up, we were really whole of India. हमारे टाइम पे हम छोटे सबके घरों में ऐसे पिक्चर्स लगी होती थी जब मैं छोटा था. इवन गांव के अंदर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये फोटो सबके हवेलियों में लगी होती थी, घरों में लगी होती थी, कैलेंडर में यही फोटो होती थी. You find all this. So we respected all, सबने देश के लिए कंट्रीब्यूट किया. तो बहुत बहुत अच्छा लगता था. महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, क्योंकि आर्य समाज का हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा उस टाइम पे एक मूवमेंट थी आर्य समाज की तरफ. तो ये सब की सब जो है कैलेंडर मुझे बचपन में याद है घरों में लगे होते थे. Then of course we have news from Assam, where the yatra has been stopped and they were not allowed to go to a temple, and that created an unnecessary controversy there. Now more and more of course other papers are full of this. This is the style, Nagara style mein the temple has been made brick by brick. No iron or steel has been used. No iron, and it is meant to last for 1,000 years. That's what is the claim. It will last for 1,000 years. Then of course you can see all celebrities. आज टेम्पल गए हैं, आज आपको शाम को दे वुड ऑल बी सेलिंग यू पान पराग, गुटका, ड्रीम 11 में टीम, या मेक इट लार्ज और हैव something or the other. So, and already there are ads today itself of some of these people, so but we are enamored by celebrities. हमें celebrity चाहिए इवेंट को बड़ा करने के लिए. तो everyone, cricket players and film stars are biggest celebrities in India. अगर कोई celebrity भारत में है तो cricket player और film star, इनकी पूजा होती है भारत में. तो they were all over. People were just उनके साथ selfie ले लो उनके साथ. So they brought the glamour quotient to the ceremony. There's a scheme by the Prime Minister, 1 crore rooftop solar project announced yesterday on the name of Shri Ram, that is Suryavanshi. So Suryavansh scheme, Pradhan Mantri Suryodaya Yojana, after the Pran Pratishtha. So 1 crore houses will be given solar energy. It's good, more and more we must invest in solar energy. इसमें कोई शक नहीं है. Sony calls of 10 billion merger with Z. We were looking forward to this. Ki Sony and Z will join together and create a huge, a company, maybe leaders in entertainment industry. But वो stocks have fallen off. क्यों हुआ है, क्या हुआ, वो बाद में देखेंगे. काम का होगा. Iran and Pakistan envoys. We covered this day before yesterday. They attacked each other and now they made friends with each other. I told you रोल किसका रहा होगा, इसमें चाइना का काफ़ी रोल रहा होगा कि तुम लड़ो मत, because both of them are very close to China. So they have returned their envoys to each other and the ties are being improved temporarily. But इसमें मुद्दा नहीं कहीं जा रहा है क्योंकि बलोच इंसर्जेंसी and Shia Sunni divide, वो that will remain. So the tension will remain on the border. Taliban enforcing restrictions on single unaccompanied Afghan women. Taliban, now nobody can do anything about Taliban. Taliban is here to stay and they will stay.
देन वी हैव फैमिलीज ऑफ होस्टेजेस, ये इसराइल का दूसरे पेपर में अच्छा कवर किया, मैं बताऊंगा आपको. रशिया ब्लेम्स की फॉर अटैक ऑन गैस टर्मिनल इन बाल्टिक सी पोर्ट, तो वहां पर भी लड़ाई चल रही है. फुटबॉल, we are losing in the AFC Cup. We lost to Australia, we lost to Uzbekistan, and now we have a match against Syria. War-torn country, Syria, and this match is being played at Al Bayt Stadium, जहाँ पर अभी World Cup हुआ था दोहा में. But we have lost five goals. We have not been able to find the net even once. Pakistan hockey team doesn't qualify for Olympics for a third time. A nation which was champion in hockey. 64 के बाद दे स्टार्टेड बीटिंग एवरीवन, हेल ऑन, हमें भी हराते थे, रेगुलरली हराते थे हॉकी में. नाउ दिस इज द थर्ड ओलंपिक दैट पाकिस्तान टीम इज नॉट इवन मेकिंग इट टू द ओलंपिक्स. इंडिया ऑफ कोर्स is in a very tough draw for the next Olympics. We have Australia, we have New Zealand, we have Belgium in our pool. Belgium is world champions and number 2. तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा. हॉकी में कवर करता रहूँगा. जैसे ये पेरिस ओलंपिक्स आएंगे, आई विल बी कवरिंग ऑल द मेजर स्पोर्ट्स, बट हॉकी आई विल बी कवरिंग बिकॉज दैट इज इट्स अ नेशनल गेम. नाउ वी कम टू इंडियन एक्सप्रेस, January 22 to 2024. So the paper is full of news of Ayodhya, in fact the entire paper. However, CPM to TMC to opposition walks tightrope on Ayodhya. तो opposition के लिए थोड़ा सा ये मुद्दा है कि वो क्या करें, इस पे क्या करें. Should this they have not gone there. Let me put on the slide. Yeah, let me put on the light. Emergency light. This is our emergency light to be used when the main slide go. Okay, so this is a crisis for the opposition and they really have no answer to this. Anyway, chalo, Ayodhya puts troubled past behind, looks to present for its future. So the city is developing in a huge manner. It's been, I'll show you some of the snapshots. Again, of course, various parts of the country, bhandaras were held. Here to all societies, gates, all over they have this flags, saffron flags everywhere, and then of course rally in Calcutta, Assam, other places. There was a bit of trouble in Nagpur in Maharashtra, few places. Thank God no riots. That is a good thing. Now this is the huge editorial, a seminal milestone, the journey ahead. Seminal milestone and the journey ahead. चलो लाइट आ गई है. January 22 asks nation for nothing less than a new self-description, bridging distance between Ram and Rashtra, as Prime Minister framed it. It needs determined exploration of common ground. Exactly some of the lines where in the Hindu was very critical, but here it is more conciliatory. So here will no more be just another day in life of a nation. It will be the moment when a temple was consecrated in Ayodhya, when a country in the throes of transition arrived at a seminal milestone. A political movement that began as a challenge to the ruling consensus, having made its way to the system's center, stamped its dominance and became the establishment, has now almost 10 years later brought a never before convergence of popular will, state power and religion. Popular will, state power and religion all together in one place. In a country where secularism was defined not as a strict separation of the state and religion, but in its best version as equal respect for all religions. हमारे यहाँ क्या है? Our secularism is equal respect for all religions. But in its present version and as equal as where 73 years ago its first prime minister cautioned, I told you, cautioned the first president against state involvement in temple inauguration. The just consecrated temple in Ayodhya, the prime minister doing the honors, calls for a new word in place of the old. January 22 asks the nation for nothing less than self-description. As a consequential as this moment is, however, a transformative as it is in larger significance, it has not caught the nation by surprise. The BJP's serial electoral victory since it first won the centre with a single party majority in 2014 steadily paved the ground for a Ram temple on the site where the Babri Masjid was felled in 1992.
was the promise of the party to its voters, even when its coalition allies forced to push the commitment onto back burner. तो ये है politics, religion and state power at one place. Then of course this is on one nation one election. Somebody was asking me this morning, इस पे हमने एक पहले भी आर्टिकल ये है, one nation one election panel will be seen as rubber stamp unless it gives space to opposition which must join the तो कोई है ही नहीं उस टीम में. They had hurriedly called the one of the leader of opposition to join the panel. इससे मेरे को रात को फोन आया कि सुबह आ जाओ, मैं नहीं आ रहा हूँ, I'm not taking part, I was not consulted. So there's not a single opposition member in the panel, एक भी नहीं opposition का. And whatever opposition there was, opposition has given very clearly that they don't like this idea, this panel should be wound. But if they come out with anything, then it will be like a rubber stamp कि this was asked to them and they have delivered that. The Ram Rekha, we used to hear of Lakshman Rekha, now it's Ram Rekha by Nirja Chaudhary, and she says that where does this leave the minorities? He says, where does this leave the minorities who have accepted the court verdict but feel insecure and beleaguered in an assertive Hindu India? How will Modi's words be heard at the highest level and heeded by those on the street? Will triumphalism, victory, jeet hasil karna, push the boundaries of social discord, or will the Sangh Parivar, now that it has attained the long sought after Ram temple, which it saw as an assertion of Hindu identity and as a symbol of freedom from slavery, now reach out to others in a spirit of reconciliation? Ki kya will we push the minorities, and how is the person on the street seeing it? Will it see it as a victory, triumphalism, or it will be a move towards reconciliation? Ki theek hai, we got the temple, we wanted the temple, we are struggling for the temple, now let's move toward reconciliation, and let's not dig any old wounds. So let us see what happens. But this is by her. And then we have an article by Devdutt Patnaik. मैं काफ़ी follow करता हूँ इनको. He is a mythologist. He's written over 50 books. He's from Odisha. And he says beyond Ayodhya, there are several hundred Ramayans composed in last 2000 years. So in last 2000 years, many Ramayans. And he is very candid, he is very frank, he is very upright. And many of the fault lines which we tend to ignore, he brings it out in his books, in his writings, and his tweets. So he says the Ganga river basin contains 50% of India's electorate. तो ये जो गंगा बेसिन है, इसमें 50% भारत का वोटर है इसमें. So the only Ramayana that really matters to Hindu politicians, 16th century Ramcharitamanas of Goswami Tulsidas, written in Avadhi, a dialect of Hindi. There are however several hundred Ramayanas beyond the Hindi belt. तो पूरी की पूरी बात है हिंदी बेल्ट की, जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ की. There are however several hundred Ramayans beyond the Hindi belt composed in last 2000 years that deserve equal respect. Here is a sampling of over a dozen retellings with their dramatic variations of Valmiki's ancient tale. तो उन्होंने अलग अलग जो important रामायण है, हर एक में अलग नजरिया है, हर एक में अलग नजरिया, हर रामायण में. This is of course the extract of the Prime Minister's speech which he delivered after the opening ceremony of the temple. And then we have turning the pages with erasers. क्या हम ये जो पिछला मिटाने की कोशिश करें? इरेजर हम बचपन में यूज़ करते हैं, पेंसिल से लिख दो फिर मिटा दो. सो ये सुहास पालशेकर का आर्टिकल है, लीव द कोट्स आउट ऑफ दिस. व्हाट डज द टेम्पल इन अयोध्या मीन फॉर समवन हु इज परसुएडेड बाय द ऑरा ऑफ द न्यू राम? दिस इज द न्यू राम. व्हाट ही सेज, दिस इज नॉट द ओल्ड राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम. नाउ दिस इज द न्यू राम, very aggressive, very forward, and young people have taken on this challenge. So this is not the. So he says here, with the inaugural of the new temple, it is said that historical wrongs have been righted. कि पुरानी जो गलतियां हुई तो हमने ठीक कर दी है. But more than that, with the new temple, a new Ram is being launched. The talk of the town is not so much about deep devotion of faith, but about the grandiose nature of this moment. It is necessary, therefore, to step back from political calculations. तो कुछ देर के लिए पॉलिटिक्स, इलेक्शन 2024 से पीछे हट के देखो कि क्या बना रहे हैं हम, क्या है यंग लोगों के माइंड में, क्या है. सो ironically, though the event is about building of a new temple, the sensibilities it is suffused with are neither about religion or not about constructive emotive energy.
The moment represents our collective entry into the era of erasers. At least 3 such erasers deserve to be listed. तो उन्होंने 3 erasers की बात की है जिसमें plurality है और और कई चीज़ें उन्होंने लिखी हैं going back last 30 years. But today is the day to rejoice. So here you have Air Force helicopter, and this is how it was. All the main characters are here, and actresses are, of course, they have been shown everywhere. अभी दिखाता हूँ सारे actresses. ये देखो सारे hero heroine, all the rich and the very rich. They all came in chartered aircraft, VVIPs, chartered aircraft. More than 100 aircrafts, chartered aircrafts landed in Ayodhya yesterday. ये लोग हैं. आम आदमी कहाँ है इसमें मुझे पता नहीं कहाँ है लेकिन सब के सब ये पूरे एक्टर्स हैं. पूरे कोई ना कोई कहीं ना कहीं जो है वो चल रहा है. Only person I think was involved in 92 demolition of mosque I can see is Uma Bharti here. So ये है. Now we come to the explained drivers of food inflation. What are the drivers of food inflation? This is Harish Damodaran. Global food prices have crashed in the last 1 year or more, but inflation remains sticky and elevated in India. The factors responsible for India's food inflation are more domestic than global. पहले हमने कहा यूक्रेन वॉर था, रशिया यूक्रेन, उससे पहले कोविड था. नाउ ही सेज द फैक्टर्स जो प्राइजेस को पुश कर रहे हैं वो डोमेस्टिक. अब इस पे हम ग्लोबल उस पर नहीं जा सकते कि बिकॉज समथिंग इज टेकिंग प्लेस समवेयर एल्स, इसलिए ये हो रहा है. WF मीट इन दावोस, 5 की टेकअवेज. ये मैंने बताया हर बार ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है दावोस में विंटर में. इट्स ऑलमोस्ट अ वीक लॉन्ग मीटिंग दैट टेक्स प्लेस in Switzerland. So what are the 5 takeaways? Artificial intelligence, war and uncertainty, climate change, China's economy, and finally India. उसके बारे में multivitamins can boost memory and cognition. This is a study. Free movement regime along Myanmar border, rational and criticism. So ये FMR free movement regime which we discussed day before yesterday. And the construction of a wall, a fence between India and Myanmar whenever it starts. So what is going to happen to this? We had given 16 kilometers they can move across to meet their relatives, their friends and all. So this is what is the problem, and there is so much of drugs and terrorism and gun running. Yeah, wherever there is movement, even we feel it's people to people contact, but finally people who take advantage are the people who move drugs, people who move guns. Ye panga. That is why we have to. It's so important to secure your frontiers. So important to secure your frontiers because we don't want drugs to come in. Lot of drugs come in. Myanmar is part of the Golden Triangle for drugs. Pehle drugs used to come from Afghanistan. I don't know how many come from there. Must be, and lot of drugs move from Myanmar, Thailand, and that area. जो hostages are still not rescued, more than 25,000 people killed. 25,000 लोग मारे जा चुके हैं इस लड़ाई में. लेकिन जो hostages हैं 130, 140 or so are still with Hamas. Hamas leadership is still intact. So जो लोग हैं जिनके पेरेंट्स वगैरह they have stormed the Israel parliament. वो इसराइल की पार्लियामेंट में घुस गए. And they are telling Tel Aviv, they are telling the Prime Minister Netanyahu, तो बात क्यों नहीं करते? Why are you not talking to Hamas and get our loved ones released from there? So this is an issue where, and Israel is of course pounding Khan Yunis and so they are very aggressive. There is no let up in Israeli operations, but the local people in Israel are all wanting peace and return of their hostages. तो ये है वहाँ पे. पाकिस्तान ईरान हमने कवर कर लिया है. They have reinstated the envoys and they are back to talking terms. Now we come to the Times of India. मैं बोल रहा था कि ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट स्टार्ट हो गई है अयोध्या में, फ्लैट्स की, प्लॉट्स की, होटल्स की. ठीक है, तो एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव द होल न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ दिस. देव टू देश, राम टू राम, राम राष्ट्र टू राष्ट्र. एंड ये है जेट
Jet, helicopters, swanky cars, VIPs, 10 lakh diyas, Ayodhya changed, so has life there. तो आए, देखा और गया, निकल गए होंगे, शाम सुबह लैंड किए होंगे अपने अपने जहाज़ों में, बॉम्बे से इधर उधर से देश में लैंड किए, फ़ोटो खिंचवाई, 1-2 घंटा वहाँ तमाशा देखा और निकल गए. सो दिस इज़ over 100 private jets, rose petal showering Indian Air Force choppers, swanky cars, rich and famous people. Ayodhya on consecration day saw all these and more. But it was the townspeople forced to live with police bandobast for 3 decades who brought life and light. So इतना पुलिस लगी रही है यहाँ, इतनी CRPF पुलिस, कभी यहाँ नाका कभी वहाँ नाका. Finally the people who live there, they have lighted a lamp and hope there is no more riots and things like that there. And we have ended an era and a new era. ये अलग अलग जगह पे चल रहा है, दिल्ली में है, बाकी जगह. Then women power and Republic Day parade. There will be more women than men probably marching in Republic parade this time. And there is a great human story of the Tata Marathon in Bombay. It's a very important marathon on India's calendar. And this is about Vikas Kabra. He clocked his worst timing. You know why? Because when he was running, he found somebody who had fallen down and needed immediate attention. So he immediately, a person who collapsed in front of him, he recovered him, and he says, I'm happy, my timing was bad, but I was able to save a person's life. Then of course Maldives news. Manipur, again there is some movement on Manipur. Let's see, center is again trying to send a team for to Manipur to hold peace talks, because Manipur now is going to be almost 8-9 months there is no peace. This is, of course, we have covered the BSF's jurisdiction. Can it be 50 kilometers from the border? And today, of course, Parakram Divas, Netaji Subhash Chandra Bose's birth anniversary. Then, of course, then again, all I'm showing you because many of you will not get the newspaper, but at least you know what came on the paper. These are the jewels. These are the ये आभूषण है, Ram splendent idol sparks with crores worth of gold and gem jewelry. Crores की ज्वेलरी है जो कि राम लल्ला के लिए यूज हुई है. This is Mukut is 1.7 kg, 22 karat gold. Tilak is made of yellow gold, weighs 16 grams and 3 carat. Necklaces are, there are 3 Vijay Panchalad and ek aur hai. And then Kamar and Baju Band, Dhanush Band, silver items, Kangan, Pag Kada, stiff gold pile and rings. So these are worth crores. Then Diwali comes early with Ram's return. You can see the laser show on the Saryu river. And then of course, other pictures. Celebrities and all are here. ये हैं हमारे celebrities. And this is of course the international news. Angry king stormed their palace. The palace known as Knesset, the Israeli parliament. So they have gone and stormed that. बाकी हमने now Canada has put a cap on foreign students. So Indian students which are going to Canada in big numbers, there is a cap of 2 years now. They have brought it down. Canada is unable to handle so many students coming to to Canada. This is of course we have covered this Ayodhya moment, small town designed with big ideas on spiritual tourism. This article on after consecration, editor, BB selfish games. Netanyahu. What Netanyahu is doing, a rejection of two-state solution is about his political survival, not Israel's security. So Netanyahu, I don't know what is going to happen in next elections in Israel, but looks like he has upset a lot of people with the way the war is going. Because
ना तो aim and objective achieve किया and hostages are still in that small Gaza strip. They are unable to locate the hostages and get them out from there. Must win game against Syria today. We will let you know the score tomorrow. So anyway, we've almost finished here. Now let me let me see some of your messages. Amit Sinha, Ram is character, Ram is action, Ram is thought, Ram is certain creation, Ram is foundation in life itself. Very nice. Then Zaka, sir, what do you think about a victim of Manipur violence feels after watching a nation celebrate their wounds and sorrow being? We don't know because nobody has gone to cover them and ask them. We don't know. India and Qatar sign new trade agreement. I don't know. It's not there in the papers. Thank you, Harish Kundal, Preeti Yadav, Vivek Yadav, Sanjeev Kushwaha, Vaishnavi Pathak is late. Dipayan, you should know who gave him the title Mahatma. Rabindranath Tagore gave him the title Mahatma. Yes. ठीक है, सायन चक्रवर्ती, आप रहो आराम से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें. बट टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द लेजेंडरी सुभाष चंद्र बोस. ठीक है, द ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया. जय हिंद, राम राम. मैथ्स कैसे प्रिपेयर करें इरफान? मैथ्स का कोई तरीका, एनी सब्जेक्ट यू हैव टू स्टडी इट. कोई और तरीका ही नहीं. देयर इज नो शॉर्टकट. देयर इज नो शॉर्टकट. यू हैव टू स्टडी इट. सर विवेक, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या लिखा है. एमयूएन में पार्टिसिपेट करने के क्या फ़ायदे हैं? एमयूएन, अच्छा, आप एमयूएन के मिनी यूनाइटेड ने, बिल्कुल आप एक, इट्स वेरी गुड फॉर करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज. बहुत अच्छी इवेंट होती है एमयूएन. यू मस्ट टेक पार्ट. यू मस्ट टेक पार्ट इन सच इवेंट्स. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. आयुष चौधरी. सुरभि राठी, टुडे इज वन एंड ओनली फेयरलेस लेजेंड नेताजी इज बर्थडे. Raza Zahurul Islam here. Very good. UPSC with RZI. Thank you, Pallav Jha. Great and happy morning. Sayan Chakrabarti, Chandramani, Vanshika, Samir. Just completed my 10-kilometer run but added 2 kilometers today. Very good. ऐसे ही पता नहीं चलेगा आप 2 किलोमीटर से स्टार्ट करते हो और कब आप मैराथन दौड़ना शुरू करोगे. ठीक है. सो रनिंग is humans are born to run. Jai Hind sir, I am serving person in AMC. Very good. नाम लिख दो अपना, जिससे आपको नाम से बोले, है ना. नाम सबसे खूबसूरत नाम आपके माँ बाप ने दिया है. थैंक यू विशाल. लेट मी सी नए मैसेजेस क्या हैं. हमने BOAC कोर्स लॉन्च कर दिया है. BOAC कोर्स. सो अब पिछली बार की तरह मत करना. अब BOCC वो फुल हो गया और बच्चों इतनी रिक्वेस्ट पूछो मत. सब प्लीज़ ले लो. हमने कहा दैट इज़ ऑलरेडी क्लोज्ड. सो दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल फॉर दोज हु विश टू ज्वाइन. एंड द नेक्स्ट BOAC कोर्स इज स्टार्टिंग. उसके बाद AOCC कोर्स आएगा. आई नो अनंत एंड ऑल आर वेटिंग, बट फर्स्ट विल बी द BOAC 26th कोर्स, एंड देन वी विल गो ऑन टू द next BOCC and the Advanced Officers Communication course. Sir, I will join IF Army as an officer and will make you proud. Thank you Flanker. अपना नाम लिखो तभी मुझे पता लगेगा किसने लिखा है. Calcutta Book Fair, very nice. So I want advice for SSB NTR officer interview. वही है SSB, वही है. नॉन टेक्निकल के लिए आप बात कर रहे हो. फूजी टाइगर, आपने नाम नहीं लिखा हुआ. अपना नाम लिख दो ना, फिर मुझे भी ऐसे ID से बुलाना नहीं पड़ेगा. तो
तो उसमें जो है आप जो है एनरोल ऑन द BOAC कोर्स, डू द कोर्स, यू विल कम टू नो, यू विल गेट अ मॉक इंटरव्यू, यू विल गेट साइक असेसमेंट, यू विल गेट अ फुल सीरीज ऑफ GTO एंड अ वेरी वेरी एक्साइटिंग करंट अफेयर्स, वेरी वेरी एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। ठीक है, 5 दिन का। सो ये 21 दिन का कोर्स है, उससे आपको पता लग जाएगा आप कितने पानी में और आपने क्या, अपने आप क्या करना है। यू डोंट हैव टू गो फॉर एनी ऑफलाइन कोचिंग, डोंट वेस्ट योर मनी, डोंट वेस्ट योर मनी एट ऑल। ठीक है सर, more ways apart from investment for India to enter in Africa, as Uganda is asking for. All countries ask for investment. हम भी तो कहते हैं, हम भी तो यूरोपियन यूनियन को, अमेरिका को, जर्मनी, फ्रांस, सबको कहते हैं इन्वेस्ट करो इंडिया में। एवरीबडी वांट्स, चीफ मिनिस्टर्स कहते हैं हमारे स्टेट में इन्वेस्ट करो, है ना। DC, SP, MLA, MP कहते हैं हमारे हमारे डिस्ट्रिक्ट में इन्वेस्ट करो। तो अफ्रीका वांट्स इंडिया टू इन्वेस्ट, बट हाउ मच कैन वी इन्वेस्ट, इन व्हाट फॉर्म कैन वी इन्वेस्ट? Can we compete with American investment or Chinese investment or Russian investment? That is a key. हर्ष शुक्ला, सर मैं गांव से हूँ, UP के। सर मैं NDA की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर, SSB के लिए, और किस मंथ से न्यूज़ पे? पिछला 6 महीने कम से कम करो, बट अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन वीक है फिर कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। यू शुड बी एबल टू रीड इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, लिसन इन इंग्लिश एंड राइट इन इंग्लिश। ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एनीवन, मेरे पास हज़ारों मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे और इस पे, सर इंग्लिश नहीं आ रही, क्या करें, NDA में जाना है। सबसे पहले कहता हूँ फाउंडेशन स्टोन इज़ प्लीज़ इम्प्रूव योर इंग्लिश रीडिंग। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे अखबार पढ़ सकते हो आप। कैन यू लिसन, कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, कैन यू लिसन इंटायरली कि क्या बोल रहा है वो। कैन यू स्पीक सिंपल इंग्लिश, कोई हमें अंग्रेज नहीं बनना है, सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसेस। एंड कैन यू राइट, कट 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 करके क्या आप लिख सकते हो इंग्लिश में मन के विचार। ये इसीलिए मैं कहता हूँ डायरी राइटिंग करो, इसीलिए मैं इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ। सो चाहने से अकेले नहीं होगा। एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो टू NDA, एवरीवन, एवरी यंग पर्सन, चॉइस तो में पहुँच जाएंगे, जोश है, देशभक्ति, मैं मानता हूँ, लेकिन यू नीड टू वर्क ऑन दैट। नागपुर, जय हिंद, वेरी नाइस। Which course should we buy for SSB? Then go for BOAC course. Don't waste money in any offline. ये ऐड दे दे के लोगों को पैसे देते हैं कि हमारी YouTube पे वीडियो डालो, मैंने वहाँ से किया, ये किया, वो किया। Don't get floored by ads. I'm telling you. Don't fall for ads. ठीक है, ऐड देख के मत जाओ या किसी की बात सुन के मत जाओ। ईरान इज वेरी मच पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया। अब इनको गल्फ नहीं कहते, मिडल ईस्ट नहीं कहते, द रियल टर्म इज जो है वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया। हम साउथ एशिया हैं। ईस्ट एशिया है आपका म्यांमार, सिंगापुर और थाईलैंड एंड लाओस एंड कंबोडिया, ये ईस्ट एशिया है। हम साउथ एशिया हैं एंड वेस्ट एशिया है ये सब। अब ये मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, कमल सर प्लीज सजेस्ट अ बुक टू स्टार्ट। मैं को आप जो आपको मन करता है वो पढ़ो। शुरू में जस्ट रीड वॉट एवर यू लाइक टू रीड। अब मैं आपको कोई बहुत भयंकर किताब रिकमेंड करूँ, आपको एक पेज के बाद मज़ा ही ना आए पढ़ने, समझ ही ना आए क्या, आप साइड में रख दोगे। सो इनिशियली जस्ट रीड वॉट यू एंजॉय रीडिंग, जो भी आपको पसंद है, जो भी ये पसंद है, जो भी पसंद है, प्लीज़, मैं जो भी, में सब कुछ शामिल है। जस्ट रीड, जस्ट पिकअप अ बुक एंड रीड। फिर देखो आपको धीरे धीरे 15-20 किताब पढ़ के आपको आइडिया होगा कि आपको किस चीज़ में। हाउ टू मेक क्राइम फ्री इंडिया, IPS Deepak Lodha has come. Bhai, thank you very much. We have an IPS officer here in the class. How to make crime free? You should be telling us. You are police service officer. आप बताओ कैसे कैसे क्राइम फ्री होगा इंडिया। You need law and order. You need obedience by people. You need very fair system of policing. You need lot of reforms in the police कि लोग पुलिस से डरे ना, है ना। पुलिस भी बिना रिश्वत लिए, बिना कूटे हुए काम करे जैसे बाहर है, और अपने आप लोग जो है फॉलो करें लॉ को। समथिंग लाइक दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू हैव अ क्राइम फ्री कंट्री, बट इज अ यूरोपियन, एवरीवेयर देयर इज क्राइम। थैंक यू बॉबी भिष्ट फ्रॉम रानीखेत। Learning from your habits of making weekends longer
लास्ट संडे रैन 40 किलोमीटर। अरे वेरी गुड। ये मैं हमेशा कहता हूँ, मेक योर वीकेंड्स लॉन्गर। सर माई डिज़ायर फॉर BOCC कोर्स बट माई बोर्ड एग्जाम 22 February। आई एम राइट इंग्लिश एंड आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। अच्छी बात है, बोर्ड कर लो, उसके बाद कर लेना। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करूं, क्योंकि शुरू से करना है। हर रोज़ ये देखो आप, और पुराने इश्यूज, जेनमोर मैगजीन के पुराने इश्यूज आप डाउनलोड कर लो, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे रखे हैं पुराने इश्यूज, सो दैट विल पुट यू टू सम। इज अन अकेडमी गुड फॉर रिटर्न एग्जाम? इट डिपेंड्स कि आप कौन सा वाला कोर्स अन अकेडमी पे ले रहे हो। ऑनलाइन है, रेट्स आर वेरी रिजनेबल, योर चॉइस। बट हाँ, सर्टनली जिसने पास होना है उसके लिए ऑफलाइन जाने की जरूरत है, मैं बता दूं। डोंट वेस्ट मनी इन ऑफलाइन, टू मेनी डिस्ट्रैक्शंस। सर लॉ ब्रेक करके उसके लिए कोई लॉ एक्शन नहीं लेगा? अच्छा, कृष्ण कुमार ढुल, ओ वेरी नाइस ढुल। ये देखो, वैष्णवी ने किताब सजेस्ट किया है, लेडी टैंगलवुड इज वन ऑफ द गुड बुक्स टू स्टार्ट। इनिशियली ना वो बुक्स पढ़ो जो बच्चे पढ़ते हैं, एनेट ब्लाइटन, हैरी पॉटर, है ना, ये फेमस 5, ऐसे बहुत छोटी छोटी किताबें। कॉमिक्स पढ़ना शुरू करो, कॉमिक्स वगैरह अगर मिल जाते हैं। अमर चित्र कथा बड़ी, उसमें बहुत हिस्टोरिकल उसमें कवर किया गया ऐसा। थैंक यू नवीन। हाँ, सी पल्लव झा इज इन एम्स्टरडैम। He says everyone was congratulating me on the Ram Mandir, but with that they were also very sorry regarding the extra political factor added over there. यही है, देखो यही मुद्दा हम भी टच करते रहे हर रोज, कि क्या पॉलिटिक्स और स्टेट को मिक्स करना चाहिए। पॉलिटिक्स गवर्नेंस है और रिलीजन पर्सनल अफेयर। रिलीजन मेरा फेथ है, मेरा रिलीजन है, मैं कैसे पूजा अर्चना करना चाहता हूँ और कैसे करना चाहिए। तो ये इशू आगे भी आएगा। लेट्स सी हाउ हिस्ट्री जजेस this event, whether politicians should be taking the center stage on religious matters. So this issue you all can discuss, अच्छे से discuss करो। Leaders are not born, they are made. Fan club, leaders are made, leaders can be trained, leaders can, खुद भी आप लीडर बन सकते हो, they are not born, no। कोई डीएनए है, इतना रिसर्च हुआ है ह्यूमन डीएनए के ऊपर, कोई डीएनए किसी ने बोला ये वाला क्रोमोसोम है जो लीडरशिप का है, हैं? ऐसा नहीं, बिल्कुल। आई डोंट बिलीव इन एट ऑल, आई जस्ट डोंट बिलीव इट, दे आर बॉर्न। यू कैन बी ट्रेन टू बी अ लीडर। विभाष कुमार, अच्छा यू आर पोस्टेड इन प्रयागराज। आप BOCC, अगला BOCC ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है वो मैं बता दूंगा। ये कौन है जुगाड़ू फौजी के बारे में? मुझे नहीं पता भाई, मैं नहीं देखा कोई ऐसी चीज़। कौन है ये, क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता। अब ये विशाल मिश्रा, ये कोई डिबेट का इशू नहीं है कि MP MLA को पेंशन मिलती है 5 साल के लिए, अग्निवीर 4 साल के बाद पेंशन। ये कोई फ़ायदा नहीं है इस डिबेट में पढ़ने का। डोंट मैं बार बार कहता हूँ, इन चीज़ों में मत पढ़ो, ठीक है। सो चलो, वी हैव या राम इमाम हिंद, जो कि अल्लामा इकबाल ने श्री राम को टाइटल दिया था। The Snow Found Me at Last is the very good book. There are a lot of books, but there's so much to read, so much to read. Read something that interests you. किसी को फिक्शन पसंद है, किसी को रोमांटिक स्टोरी पसंद है, किसी को सस्पेंस थ्रिलर पसंद है, किसी को जंगल की, जिम कॉर्बेट वगैरह की टाइगर हंटिंग के बारे में और जंगल्स की स्टोरीज पसंद है, किसी को आदिवासी स्टोरी, किसी को माइथोलॉजी पसंद है, किसी को माइथोलॉजिकल टेल्स बहुत पसंद है, उस पर बहुत किताबें हैं। तो आपकी मर्जी है, व्हाट यू लाइक। तो चलो, विल एंड इट हियर। रियली एंजॉयड द सेशन एंड tomorrow we'll be back at the same time. Tomorrow I also have to go for recording a program for 26 January to Noida Film City कल। तो देखते हैं कितने बजे करेंगे, हम कैसे करेंगे, आई लेट यू नो। बट मेरा एम रहेगा कि वी मस्ट कवर द न्यूज़पेपर एनालिसिस टुमारो, देन आई विल गो। सर मैं BSc सेकेंड ईयर मैथ्स हूँ, बट मैं CDS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, तो स्टडी कैसे करूँ? जार्विस टेक्नोलॉजी, इसके लिए आपको
आपको बहुत मैंने वीडियो बनाई हुई हैं CDS के लिए, मैं खुद CDS से हूँ, बहुत वीडियो बनाई हुई है, अब देखो तरीके से जाओ। एम में, हाँ पिछली बार एम में हमने दोबारा कर दिया था, बिल्कुल ठीक ठाक। पढ़ाई में मन नहीं लगता बट अफसर बनना, ये कैसे, ये नहीं हो सकता है। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है अफसर नहीं बन सकते हो। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, दोनों चीज़ें अलग अलग ट्राई। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, वहां ले जा रहा है, अफसर बनने का रास्ता अलग है। हाँ सुधा मूर्ति पढ़ लो, किसी को पढ़ लो, इतने इंडियन ऑथर्स की बुक्स हैं मेरे पास यहाँ पे, कितने सारे, अरविंद अडिगा इज देयर, है ना, उसकी इतनी सारी किताबें हैं। एंड और भी बहुत हैं अपने इंडियन ऑथर्स, इतने सारे हैं, देयर सो मेनी पीपल वर राइटिंग। यस, आई एम कमिंग टू कलकत्ता, आई लेट यू नो कलकत्ता का प्रोग्राम, आई लेट यू नो, डेफिनेटली कलकत्ता इज देयर, डेफिनेटली इट्स ऑन द कार्ड्स। चलो, सो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ेदार सेशन था। वंस अगेन जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, मैं अपना ये टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ। एंड BOAC का पोस्टर मैंने कल डाल दिया है, आपको नंबर दिया हुआ, उस पर प्लीज़ ट्राई एंड गिव अ व्हाट्सएप कॉल और अ व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है, कई बार कॉल लगता नहीं है, तो जस्ट गिव अ मैसेज, इट टेक्स लेस टाइम एंड यू विल लर्न हाउ टू। ACC के लिए कुणाल, ACC के लिए क्या आप बुक्स अवेलेबल हैं, जो भी आपको पुराने ACC वाले बता देंगे, बट रिटन एग्जाम के साथ साथ वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलो, तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, विल मीट टुमारो एंड टाइम आई लेट यू नो, इफ इट विल बी एट 10 o'clock और इट विल बी एट 9:30, आई लेट यू नो टुडे इटसेल्फ। ठीक है, चलो, हैव अ ग्रेट टाइम गाइज, प्लीज लाइक द सेशन, subscribe to the YouTube channel and always stay happy, stay positive. Thank you. Jai Hind.